Here in today's session, I will gonna tell you about the physiological changes during pregnancy. So pregnancy में बहुत सारे changes होते हैं और today we will gonna study क्यों changes, what are the various changes and all. So let us talk with the vulva. Okay, so the genital area will have edematous, and why it is edematous? Because of this increase in vascularity. Okay, then we are having dear about the vagina. So vagina color also changes, उसका color change हो जाता है, वो hypertrophied है, edematous हो जाता है. Okay, and because of that there is a bluish discoloration in the vaginal area and all, and that thing is known as a Jacobmer sign. जब bluish discoloration हो जाता है because of increase in vascularity and all, that is known as a Jacobmer साइन. ठीक है, यहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रीशंस. सो इफ टॉक अबाउट द सिक्रीशन, जो सिक्रीशंस आती हैं वो बहुत ही थिन और कर्डी इन नेचर होती है. ओके, वेरी थिन एंड कर्डी इन नेचर ड्यू टू मार्क्ड एक्सफोलिएटेड सेल्स बैक्टीरिया. सो मेनली डियर we are having a thing which is known as a lactobacillus. Okay, lactobacillus acidophilus. ये जो होता है, this is the foremost kind of, you can say, this thing because under the influence of estrogen and progesterone and all, the pH concentration जो सिक्रीशन का एसिडिक इन नेचर होता है ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ना हो. इफ यू टॉक अबाउट द यूट्रस डियर, जो यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं, यूट्रस के मसल्स हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया हो जाता है उसमें भी डियर. ओके, उसमें भी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया हो जाता है उस एरिया में. क्यों होता है? बिकॉज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है. तो नाउ यू विल गोना सी कि एज अ होल यू शुड हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या एनाटमी ऑफ फिजियो होता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू understand the what are the changes. So let us discuss a basic anatomy physio. So this is the ovary, this is the infundibulum, then we have an ampulla, and then we have a isthmus, and then this intramural area, this is intramural. So this is a various layers of the uterus from inside to outside. Endometrium innermost, then we have a myometrium. Okay, and then the foremost outer area is known as a perimetrium and all. So this is the same thing. Now all of you should know कि the uterus, जो uterus है वो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लैक्स्ड होता है. एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड होता है. ओके, तो नाउ व्हाट इज एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स हम कैसे कहते हैं डियर? नाउ यू कैन सी दिस इज अ लाइन विच इज गोइंग फ्रॉम द दिस ब्लू लाइन गोइंग, दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द वजाइना, एंड नाउ इट इज intersecting at the red line, and this line comes from the axis of cervix. So now these intersection is known as this is known as the angle of antiversion. ये angle of antiversion में आता है. सेम एक लाइन होती है जो यूट्रस से जाती है, बॉडी ऑफ द यूट्रस, दिस इज known as axis of the uterine body, and it intersect with that of the axis of the cervix. You can see, तो ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन. सो दैट्स व्हाई यू शुड नो कि एक यूट्रस एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स होता है. Now, all of you should know that in the starting trimesters and all, we are having a low level of estrogen and progesterone. Over the pregnancy, the value increases, and after parturition means delivery के बाद ये levels नीचे हो जाते हैं. तो जो first के trimesters में HCG, this rate is about the HCG. Okay, there is a peak level of HCG around 10th weeks तक हाई होता है, and फिर वो डिक्रीज होता है. फिर हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है. कीपिंग सम कॉन्सेप्ट्स इन द ब्रेन, यू शुड नो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के वेरियस फंक्शंस होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ईस्ट्रोजन कभी अकेले प्रेगनेंसी में नहीं देते. व्हेन देन देयर इज अ रिस्क ऑफ हैविंग this thing, then we are having a risk of having this breast cancer. Okay, breast cancer, endometrial cancer होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हमने ईस्ट्रोजन सिंगल देते हैं. इसलिए हमेशा ओ सी पी से एवरीथिंग वॉट एवर वी आर गिविंग इट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन हैज़ अ वेरी गुड रोल. जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करना प्रोजेस्टेरोन का काम होता है डियर. ओके, नाउ यू शुड नो कि यूट्रस दिए आगे की ओर जो है वो ब्लैडर पे रहता है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स, एंड बैक साइड इट्स वी हैव इंटेस्टाइन. सो दिस लेयर्स आर देयर, पेरिटोनियम लेयर्स आर देयर. ये जो लेयर्स होती हैं इनको हम पाउचेस बोलते हैं. रेक्टो यूट्राइन पाउच बैक साइड होते हैं और वेसिको यूट्राइन पाउच फ्रंट साइड होता है. ओके, सो नाउ यू शुड नो कि ऑल द लेयर्स जो होते हैं डियर वो अरेंज होते हैं 3 टाइप्स में. कुछ लॉन्गिट्यूडनस मसल्स होती हैं, कुछ सर्कुलर लाइक दिस, दे आर कमिंग इन द सर्कुलर, एंड देन वी हैव सम मसल्स विच आर अरेंज इन द क्रिस क्रॉस मैनर यूट्राइन में. ओके,
Then, if we talk about the blood vessels, there is an increase in the blood vessels supply to the uterus and all. Okay, and now let us let in the starting time what happens, जो shape होता है uterus का dear, वो बहुत ही pyriform होता है, like shape of papaya kind of, and then or it is also known as ovoid. Now there are various changes, so circular spherical form में changes होने लगते हैं. Okay. Now, if we talk about the cervix, after there is a good blood supply, the cervix also changes. So that softening of cervix because of the edematous nature is known as a Goodell sign. Goodell sign से बोलते हैं जहाँ softening of cervix को हम Goodell sign कहते हैं dear. Okay. Now we will talk about the various changes. So in the breast we are having increase in color changes also is also there. Okay. So under the influence of estrogen and progesterone, dear, जो size होती है during pregnancy, breast size भी increase हो जाती है, and there are color changes also. ठीक है, तो जो skin changes होते हैं sebaceous gland 5 to 15, that is known as a Montgomery tubercle. So this circular thing is known as a Montgomery tubercle कहते हैं. ठीक है, और कलर चेंजेस भी होते हैं किसमें, प्रेगनेंसी में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, तो एक सेकेंडरी ओरुला. तो ऑलवेज रिमेंबर this lighter area is secondary aura and the darker area is your primary. So in the pregnancy we are having Montgomery tubercles are there, we have primary areola, we have secondary areola, and most important कि 12th weeks में dear, when there might be a secretion when the breast is squeezed, there might be secretion. That secretions is known as a cholesterol, which happens during the pregnancy. So now you people just have got an idea कि what are the various changes which happens during the pregnancy dear. Now the mother will also gonna feel a Braxton Hicks contractions. ये एक ऐसे contractions होते हैं dear जो when you mother second trimester में feel करते हैं, but this contractions is kind of does not lead to any kind of cervical dilatation on. ठीक है. Now this is a kind of Hagar sign जो हमेशा एग्जाम में हमेशा बहुत मैक्सिमम टाइम ये साइन पूछा गया है एग्जाम्स में. यू शुड बी वेरी मच यू शुड हैव एन नॉलेज 6 to 8 weeks में. इसमें क्या होता है Hagar sign में डियर कि upper part of the uterus is kind of harder and lower part of the uterus is firm. So when the biomanual examination done, then it is elicited. Now there is a cutaneous changes की बात करते हैं हम. Cutaneous changes, skin changes. Face में butterfly face होगा because of the melanocyte एंड ऑल. ठीक है, उसकी वजह से बटरफ्लाई फेस दिखेगा मदर्स में. ओके डियर. Then we are in abdomen. So in today's session I will just complete these topics only. In the next session I will continue with the other physiological changes. Now let us talk about the abdomen. Abdomen में बात करें एक brown line से start होगी, तो this area is known ये xiphoid process से pubic symphysis तक आती है. तो ये जो brown line दिखती है जिससे बोलते हैं लीनिया नाइगरा. अब बात करते हैं ये जो stretch marks हो रहे हैं, stretch में this is known as striae gravidarum बोलते हैं. ठीक है, तो और ये striae gravidarum आफ्टर प्रेगनेंसी चेंजेस होते हैं तो ये एल्बिकैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो okay, so this was for today's session. Okay, and I hope so you must have got a little knowledge, and further I will continue in the next session.